आजिका क्लास रे आमे देखिबा माइटोसिस कोन पेरेंट सेल पाखरु टे पेरेंट सेल दुईटी डॉटर सेल फॉर्मेशन करी थाए ताले आमे ताको कहबा माइटोसिस। सेल डिवीजन आमे पढिथिले सेल डिवीजन ले आमे पढिथिले कि प्रथमे सेल को G1 फेज रे एंटर करबा पड़िबो जहा कि कहा जे गैप 1 जहा कि इंटरफेज ए सब G1 S एंड G2 को कहा जिवो इंटरफेज तीनोटी सब फेज रे डिवाइड रही G1 S एंड G2 G1 को कहा जो गैप 1 फेज एंड S को कहा जो सिंथेटिक फेज एंड G2 को कहा जो गैप 2 फेज। देन आसीबो माइटोसिस मींस साइटोकाइनेसिस माने डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म को जीवो। माइटोसिस पुनी चारोटी सब फेज रे गठित प्रोफेज मेटाफेज एंड आलाफेज एंड टिनोफेज। माइटोसिस रे चारोटी फेज प्रथमे देखि दउचे प्रथमे जो इंटरफेज परे प्रोफेज परे मेटाफेज परे आनाफेज परे टिलोफेज परे साइटोकाइनेसिस। प्रोफेज रे कोन होची न्यूक्लियस मेम्ब्रेन क्रोमोसोम ए जो कलर अछि ब्लू एंड ग्रीन कलर क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोलस क्रोमोसोम रो मिडिल पार्ट को बा जॉइंट पार्ट को कहा जो सेंट्रोमियर एवं सिस्टर क्रोमाटिड अछि दीटा सिस्टर क्रोमाटिड जॉइंट अछि सेंट्रोमियर ए जो फाइबर रही ता ना स्पिंडल फाइबर ए जो रे भाती ता ना हला आस्टर रे। It is also called indirect cell division or somatic cell division or equal cell division। माइटोसिस सेल डिवीजन हुए माइटोसिस सेल सोमाटिक सेल पाखर देखा जाए सोमाटिक सेल माने नॉन रिप्रोडक्टिव सेल पाखर देखा जाए एटा होची इक्वल सेल डिवीजन माने जदी गुटिए सेल रे 2n संख्यक क्रोमोसोम अछि ताहाले जेतेबेले से डिवाइड करिवो सेतेबेले भी से 2n संख्यक क्रोमोसोम ही रहिबो क्रोमोसोम नंबर चेंज होबो नै ताहा कि ताको हमें कहबा कोन माइटोसिस। ताले एको कहा जिवो इक्वल डिवीजन जेहेतु 2n रहउछि ताको हमें कोन कहबा इक्वल सेल डिवीजन एंड इनडायरेक्ट सेल डिवीजन भी ताको कहा जिवो। इन दिस मैच्योर सोमाटिक सेल डिवाइडेड इन सच ए वे दैट क्रोमोसोम नंबर इज केप्ट constant in daughter cell equal to those in parent cell, so the daughter cell are quantitatively as well as qualitatively similar in genetic material to the parent cell, so it is also called equal division। मु कहिछि कि हमर इक्वल डिवीजन एथि पई कह जाय पेरेंट सेल पाखरे जेतिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहिछि डॉटर सेल पाखरे सेतिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम समान रहिथो ताको हमें कोन कहू इक्वल सेल डिवीजन। आको नोट रे भी लिखा जिवो जहाँ भी पॉइंट दिया है से सब को नोट रे लाइन करके तुम नोट खाता रे लिखि दियो। इट रेंज फ्रॉम 30 मिनिट्स टू 3 आवर जो माइटोसिस रो सेल डिवीजन रो टाइम केते ना 30 मिनिट टू 3 आवर पर्यंत। इन ह्यूमन सोमाटिक सेल डिवीजन लिस्ट फॉर ओनली 1 आवर आउट ऑफ द एवरेज सेल साइकिल ड्यूरेशन 24 आवर। 24 घंटा भितर केवल 1 आवर आमर सोमाटिक सेल पाखरे डिवीजन देखिबा को मिले। Mitosis occurs both in somatic cell as well as germ cell then the gonad। माइटोसिस केवल जे सोमाटिक सेल पाखरे देखा जाए ता नुह इक्वल सेल डिवीजन आल्सो सो इन जर्म सेल बट तार ना माइटोसिस न दे कि आ गुटे ना दिया जाए हमें देखिबा जेतले पढिबा ता ना कोन। तेनु माइटोसिस को दुईटी फेज रे डिवाइड करा जायछि जहा नाला कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस माने कोन ना डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को हमें कहू कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियस रो डिवीजन हे गले ताको हमें कहू कैरियोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस माने कोन डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म को हमें कहू साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस एबे लिखबा हेडिंग कर दबो कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियस रो डिवीजन। इट इज ए कंटीन्यूअस प्रोग्रेसिव प्रोसेस बट divided into 4 phases convenience on the basis of position and morphology of chromosome। से कहछि कैरियोकाइनेसिस माने ना डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस तो डिवीजन होबनी तले डिवीजन होबो कि क्रोमोसोम तले एटा गुटे प्रोग्रेसिव प्रोसेस आकु चारोटी फेज द्वारा कन्वर्टेड कराइछि कोन पई ना क्रोमोसोम रो पोजीशन आ क्रोमोसोम रो डिवीजन अनुसार आको हमें कौन करिचे ना चारोटी फेजेस से डिवाइड कर देचे। प्रथम फेज हला प्रोफेज पछर जो चित्र दिथली सेही चित्र अछि प्रोफेज रे कोन घटे चित्र हमें पढि दो। इट इज द लॉन्गेस्ट फेज ना ए होची सबुठार लॉन्गेस्ट फेज। सेकंड कोची ना डिसअपियर ऑफ सेंट्रोस्पियर इज सेंट्रियोल पेयर डेवलप्ड फाइन
radiating protein microtubules called aster ray and forming the star shaped body aster एथिरे सब aster ray formation होबो बा spindle fiber माने भी formation हुअंती स्पिंडल फाइबर एट दिया देखी याको स्पिंडल फाइबर तक आस्टर रे बोली कहते न्यूक्लियर क्रोमाटिड कंडेंस इनटू लॉन्ग थीन थ्रेड लाइक क्रोमोजोम बाय डिहाइड्रेशन एंड स्पेरलाइजेशन क्रोमोजोम रो थिबा क्रोमाटिन बा न्यूक्लियस भितर थिबा क्रोमाटिन ए माने कोन हे कंडेंस हे जिवे लॉन्ग हे जिवे थीन हे जिवे थ्रेड हे जिवे क्रोमोजोम रो डिहाइड्रेशन एंड स्पेरलाइजेशन each chromosome is formed two sister chromatid joined with the centromere joined at or centromere से कहछि सेंट्रोमियर रे से माने कोन होंती ना जॉइन होंती ताना हला सेंट्रोमियर दीटा सिस्टर क्रोमाटिड एटा गोटे सिस्टर क्रोमाटिड एटा गोटे सिस्टर क्रोमाटिड जॉइंट हिजनी सेंट्रोमियर रे ऑन द सरफेस ऑफ ईच सेंट्रोमियर देयर आर टू डिस्क लाइक एरियाज called as kinetochores and are side of attachment is called spindle fiber हे कहिछि ए जो स्पिंडल फाइबर माने एथरे कोन होसनी जॉइंट हेबे मोर कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स सो दैट these become shorter and on triangled से माने की पर हेबे shorter हे जिवे and on triangled हे जिवे nucleus membrane and nucleus are disappear एमान सब disappear हे जिवे nearly complete disappearance of Golgi body endoplasm reticulum nucleus membrane and nucleolus एमान सब completely disappear हेबे एमाने डिसअपियर होबा को स्टार्ट करिवे डेवलपमेंट ऑफ इलोंगेशन ऑफ प्रोटीनियस माइक्रोट्यूबुल्स बिटवीन टो सेंट्रियोल पेयर एमाने कोन करिवे ना डेवलपमेंट करिवे प्रोटीनियस माइक्रोट्यूबुल्स सब डेवलपमेंट करिवे कहा भीतर ना टो सेंट्रियोल पेयर भीतर जहा को हमें ना दो स्पिंडल फाइबर सेंट्रियोल्स पेयर स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल ऑपोजिट पोल आड़ सेंट्रियोल्स माने मूव करबा स्टार्ट करिवे फर्दर कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम रो पुनी फर्दर कंडेंसेशन होबो टू आस्टर बिकम्स इन पोजीशन एंड द प्रोटीनियस माइक्रोट्यूबुल्स बिटवीन देम टेक द फॉर्म स्पिंडल तेनु कोन फॉर्मेशन होबो स्पिंडल द सेंट्रल border part of the spindle is called equator while the narrow end part of spindle having called aster called pole तनो आपको कहबा इक्वेटर एंड आउ गुटे कहबा एबे देखिबा प्रोफेज पर मेटाफेज सबुठर लॉन्गेस्ट फेज थिला प्रोफेज एबे आसो मेटाफेज को देखिबा मेटाफेज रे कोन देखिचे ना मेटाफेज हम जो स्पिंडल फाइबर सेंट्रियोल थिला से माने पोल पाखो को जाई जायछंती एवं हमर क्रोमोसोम माने इक्वेटर लाइन ले अरेंजमेंट ही जायछंती मेटाफेज क्रोमोसोम्स आर मैक्सिमली condensed to are morphologically most distinct and most easily studied आमे इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप माध्यम रे मेटाफेज को देखि परिबा एवं स्टडी मध्य करि परिबा इट टेक्स 2 to 10 मिनिट ये बहुत कम समय ने 2 to 10 मिनिट क्रोमोसोम अरेंज्ड इक्वेटर इन वन इक्वेटर और मेटाफेज प्लेट आको कहबा इक्वेटर लाइन बा मेटाफेज प्लेट रे से माने कोन कोन ई जो इक्वेटर लाइन ने से माने कोन कोनती अरेंजमेंट होंदी बा मेटा प्लेट भी ताको कहा जाय ईच सेंट्रोमियर्स इज जॉइंड बाय टू क्रोमोसोमल फाइबर्स वन फ्रॉम ईच पोल ती सेंट्रोमियर रे जॉइंड होंती टू क्रोमोसोमल फाइबर बा स्पिंडल फाइबर जोथरे वन फ्रॉम ईच पोल प्रति पोल रो माने कोन कोनती ना दुईटी नेखे स्पिंडल फाइबर माने जॉइंट हेतांती दुईटी स्पिंडल फाइबर सेंट्रोमियर्स लाई एट द इक्वेटर व्हिल द आर्म ऑफ द डायरेक्शन टुवर्ड्स द पोल्स माने स्पिंडल फाइबर आर्म की पर हेबो डायरेक्शनल टू द पोल्स माने एमाने टुवर्ड्स द पोल आड़ को टाणीबे बेस्ट फेज टू स्टडी द मॉर्फोलॉजी ऑफ द क्रोमोसोम इन मेटाफेज को हमें स्टडी करि परिबा बेस्ट फेज बोली ताको कहा जाय छै आनाफेज देखिबा जो आनाफेज रे कोन हेछि ना क्रोमोसोम माने वी शेप बा जे शेप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करछनी क्रोमोसोम माने पूल रे जाय अटैचमेंट हे जाय छंती इट इज द शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन फेज ईच सेंट्रोमियर splits so that two sister chromatid have their own centromeres and daughter chromosome are formed proteinous interzonal fiber are developed between centromeres of the daughter chromosomes daughter chromosomes moves towards the opposite poles and may be V shape and J shape मु कहिछि माने को भले शेप रहबे V shape and J shape and some of the rod shape also the so then is थिला then थिला telophase रे कोन होबो ना इट इज द opposite to the prophase ए prophase रो opposite एथे कोन होबो ना न्यूक्लियस रो
एपियर हवा स्टार्ट करियो टू डॉटर न्यूक्लियस हेबा स्टार्ट करिवो आउ सब गुड़ाक डिसअपियर हेबा स्टार्ट करदेबे इट टेक्स अबाउट 1 आवर इट इन्वॉल्व्स अ चेंज व्हिच आर अपोजिट टू द प्रूफ एज ये होजी अपोजिट होजी प्रूफ एज रो अपोजिट एट ईच पोल क्रोमोसोम्स आर सराउंडेड बाय न्यू न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एंड फॉर्म द एंडोप्लाज्म रेटिकुलम जहाँ सब प्रूफ एज डिसअपियर हेतले से अपियर हेबा स्टार्ट करिवो जिबले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड एंडोप्लाज्म रेटिकुलम गोल्गी बॉडी माने मान सब डिसअपियर हेतले माने एठी सब फॉर्मेशन हेबे nuclear loss is reformed by nuclear organizing recognition region nuclear organizing region NOR nucleus ro reformation habo golgi body endoplasmic reticulum reformation habo chromosomes decondensed by hydration and disappearing of the appearing to the nuclear chromatin man सब disappear heba start karibe aster and spindle fiber are absorbed by the cytoplasm द्वारा माने ऑब्जर्व हेबे centrioles at each pole are surrounded by centrosphere to complete the centrosomes aster and spindle fiber then cytokinesis माने cytoplasm रो division को देखिबा is the process with the cytoplasm get divided to produce two independent daughter cell containing of the complete set of the chromosome cytokinesis being at the anaphase stage and continues to the telophase and into the interphase. In the end, mitosis result to genetically identical daughter cell each having diploid number of chromosome. ମୁଁ କହିଛି ଯେତେବେଳେ mitosis ହବ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ daughter cell ହବ ତାର diploid ହବ 2n ସଂଖ୍ୟକ chromosome ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆରେ ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ପାଇଁ significance କ'ଣ mitosis ର ହୁଏ କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ କଥା ଏଠି keep the chromosome number constant and genetic stability in daughter cells so the linear heredity of an organism is maintained ये जो क्रोमोसोम नंबर को ये कौन करता है ना कांस्टेंट करता है जो थे हमर लिनियर हेरिडिटी देखिबा को मिले इट हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट ए भी ग्रोथ एवं जाइगोट रो डेवलपमेंट करिवो ग्रोथ करिवो इनटू द अडल्ट एम्ब्रियो फॉर्मेशन पाई भी ये कौन करे ना ग्रोथ करे इट प्रोवाइड्स न्यू सेल फॉर रिपेयर एंड रीजेनरेशन ऑफ लॉस्ट पार्ट लाइक अपर लेयर ऑफ एपिडर्म्स यदि आमर कौन कारणवशत आमर कौन डैमेज घटला सेल ताले सेल रिपेयर पाई भी आमर माइटोसिस देखा को मिली था इट हेल्प्स इन एसेक्सुअल reproduction by the fragmentation budding and stem cutting etc ये भी कौन करे हेल्प कौन करे ना asexual reproduction करे fragmentation करे budding करे stem cutting करे ये सब etc details of mitosis are similar in all living organisms showing the interrelationship between them it also restore the nucleoplasmic ratio somatic variation when the maintained by the vegetative progression can play important role in speciation. Mitosis keep a check on the cell size, maintenance a favorable surface area ratio which increase the exchanging power of the cell. ये कौन करो ना cell exchanging power को भी increase करिवो। समस्त को जदि वीडियो टी भल लागी ताले वीडियो टी लाइक करंतु चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु जदि भी किछि डाउट अछि कमेंट करंतु जदि नोट पाइबा को चाहू तले टेलीग्राम रो चैनल अछि टेलीग्राम चैनल रे जॉइन करंतु थैंक यू।